एवरीवन वेलकम टू ईयर एंड स्पेशल और जहां हम बात करेंगे कि 2025 का साल इक्विटी मार्केट्स के लिए कैसा हो सकता है। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर संजय पारेख। ही इज फाउंडर एंड सीईओ एट सोहम एसेट मैनेजर्स। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर पारेख एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Yeah, good afternoon, ma'am. मिस्टर पारेख, लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी मार्केट्स। अगर हम 2024 का साल देखें, 2024 इट वाज डिसेंट इनफ। आई मीन लास्ट के 2-3 महीने काफी पेन भरे रहे बिकॉज ऑफ द FIIs exodus and all the macro environment that was building around uncertainty, earnings में disappointment. अब साल 2025 आपको कैसा लगता है? Can we have some bit of a relief post Trump is in office on Jan 20th? Yeah, so ma'am, basically, structurally, हमें बहुत ही we are in the best time ever. So one is the longer term. मैं आपसे I'll share you about the longer term. So हमारी जो बैलेंस शीट है, all the balance sheets, at least मेरे कैरियर में 94 से मैंने इतनी अच्छी बैलेंस शीट कभी नहीं देखी. So Okay. I'll just expand on that in the sense कि Yeah, sure. हमारी गवर्नमेंट बैलेंस शीट है, फिस्कल डेफिसिट है, कंट्रोल में है. Even after all the social spend, we will certainly have a glide path of lower fiscal deficit. Our debt to GDP Correct. keep coming down. हमारे Correct. आरबीआई की बैलेंस शीट है. जी. While फेडरल रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत उनको टफ हो रहा है, बट हमारी बैलेंस शीट लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एंड फिर भी ग्रोथ को कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज दे रन इट Right. वेरी वेरी कंजर्वेटिवली. हमारा Right. बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो भी बहुत ही Mhm. कंफर्टेबल है. कॉर्पोरेट लेवरेज ऑल टाइम लो पे है. जी. बैंकिंग बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है. थोड़ा Mhm. एनपीए बढ़ेंगे माइक्रो फाइनेंस और पीएल क्रेडिट कार्ड से, पर उससे Okay. मुझे कोई नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. एंड हाउस जी. होल्ड बैलेंस शीट एटलीस्ट टॉप एंड में बहुत अच्छी है बिकॉज गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी से वेल्थ इफेक्ट है जो 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का है. सो ऑफ कोर्स द Okay. लोअर एंड ऑफ द स्टार्टअप में सर्टनली देयर आर Mhm. इश्यूज बिकॉज Mhm. इन्फ्लेशन उनको हर्ट कर रहा है. सो वो challenges we will certainly I'll explain, but Mhm. overall all the balance sheets are in very good shape. So Okay. that is a longer term positive, and that is Mhm. where India is in a very, very sweet spot with growth rate expected of 6.5%, around Mhm. 6.5 this year and maybe जी. similar next year. So Mhm. if the growth expectation is reasonable, then we are Mhm. fine. Now, in the near term, Q1 Mhm. and Q2 earnings में definitely गिरावट थी. ग्रोथ जी. रेट बहुत अच्छे नहीं थे. Q3 जी. के अर्निंग्स भी थोड़े वीक ही आएंगे बिकॉज Mhm. गवर्नमेंट स्पेंड नहीं हुआ है. रूरल में certainly there is an impact, and even some of these states जिसने डाइवर्ट किए थे पॉपुलिस्ट मेजर्स में, तो उनका Mhm. स्पेंड स्टेट्स का जो कैपेक्स पे होना चाहिए था वो थोड़ा जी. डाइवर्ट हुआ है. सो ऑल Mhm. दैट पुट टुगेदर देयर इज क्लियरली अ स्लो डाउन. एंड ये मुझे Mhm. लगता है कि एज फोर्थ क्वार्टर में गवर्नमेंट स्पेंड जो बैक एंडेड होकर पिकअप होगा, जी. उससे वी विल सर्टनली सी सम रिवाइवल ऑफ ग्रोथ. So growth it has to come back in earnings for the Mhm. markets to be positive. So हमारा ये Mhm. व्यू है कि निफ्टी में टाइम करेक्शन हो गया है, बट Okay. प्राइस करेक्शन हो गया है, सॉरी, बट टाइम Mhm. करेक्शन टू कुड टेक अ वाइल. Okay. Because जैसे ही earnings have to look better, and Okay. as it looks better, the markets will take a positive view, and वहां से we could look at. That is our view Mhm. right now. Mhm. मिस्टर पारेख, अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स हैव रियली डीकपल्ड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस. आप यूएस मार्केट्स को देखें, हल्कापन थोड़ा आया है. इट इज सॉर्ट ऑफ पीकिंग आउट बट इट इज नॉट डाउन एंड आउट एज वी वर बिकॉज ऑफ द एफआईआई एक्सोडस. ट्रम्प विल बी इन ऑफिस ऑन जैन 20th. उनकी पॉलिसीज को देखते हुए अगर डॉलर की स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी आती है एंड पॉलिसीज जैसे वो बोल रहे हैं वैसे नहीं होती, तो व्हाट काइंड ऑफ अ सिनेरियो मैक्रो एनवायरनमेंट डू यू सी एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट्स? Yeah, so in emerging market again, we are in a very sweet spot. तो आप हम्म. देखें अगर चाइना, तो उनके some of the issues are quite structural. राइट. उनके डेट टू जीडीपी बहुत ज्यादा है.
लोकल गवर्नमेंट डेट बहुत ज्यादा है, मॉर्गेजेस में वहाँ इशू है, तो उनको स्टिमुलस एक लेवल तक ही आप सेंटर से दे सकते हैं वहां पर। सो राइट, वहां पर स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक्स भी फेवरेबल नहीं है उनके। सो करेक्ट। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट इकोनॉमी के हिसाब से मुझे लगता है कि इट कुड बी यू नो माने ग्रोथ रेट कुड बी लोअर फॉर अ वाइल। ओके। अदर इमर्जिंग मार्केट्स में जो ब्रेड्थ इंडिया में है, जो डेप्थ है, जो सेक्टर कवरेज है, वो शायद ही कहीं अदर इमर्जिंग मार्केट्स में यू सी। एंड क्लियरली हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, our demographics, our democracy, and the stability of currency is helping us and keeping us in a very sweet spot. And 6.5% ओके। growth will be an enviable growth in the world even this year, you know. So राइट, that's where I think, but हमारा प्रीमियम भी काफी ज्यादा है। ज्यादा। We are at a very high price earning, premium on price earning than emerging markets as a whole. And that is also where valuation is what we need to be always be cognizant of. Okay, what is the valuation premium we deserve and what is the right valuation premium? So we have to keep in mind. But structurally, we are much, much better poised than a lot of emerging markets around us. जैसे आपने वैल्यूएशन की बात की, क्योंकि हम अब करेक्ट हो चुके हैं, निफ्टी ने साल 2024 जो है वो 8.5% के रिटर्न्स के साथ एंड किया है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दे हैव क्लियरली आउट परफॉर्म्ड। मिड कैप्स 20 प्लस, 25 प्लस स्मॉल कैप। 2025 में कैसा सिनेरियो रहने वाला है? इज इट टाइम फॉर लार्ज कैप्स, or what kind of a sector or allocations will you do as far as the large cap, mid cap and small cap is concerned? Yeah, a very, very relevant question, ma'am. So, I'll just tell you about our product. हमारा प्रोडक्ट है जो सिंगल प्रोडक्ट है बोथ AIF एंड PMS प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 70% लार्ज कैप होगा। और Okay. अगर मिड कैप स्मॉल कैप हमें जो प्राइस वैल्यू डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा, इन सेंस रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारा ज्यादा होता है, जो Hmm. आइडियली दे शुड डबल इन 3 to 4 years, Hmm. तो हम विल हैव मोर ऑफ लार्ज कैप। अगर वो रिटर्न नहीं मिला तो हमें मिड एंड स्मॉल कैप। So Okay. that has worked very well for us. So Hmm. coming to your question, what I think is that larger caps में Nifty पे earnings ले अगर 25, 26, Hmm. so this year will end at 24, 25 first will end at 1050, जो Okay. around 60% growth होगा, 7% growth rate. Next Right. year will be more like 1200 rupees, being conservative. Okay. So 1200 रुपए में India, I think, does not deserve more than 20 times. You could Okay. go more, you can go less, but for the Hmm. interest rates, beach time is a reasonable valuation. So we are Hmm. talking about 24,000. So that's where we are saying कि price correction शायद हो गया है, but time Okay. correction थोड़ा होना चाहिए because we will transit to next year. But as we Hmm. move ahead, 26, Hmm. 27, जो Hmm. कोई भी इन्वेस्टर वर्ल्ड में एक साल के लिए नहीं लेता, they look for Hmm. 2 years. And Jan, Right. Feb, March में people look at 25, 26 and 26, 27. And Hmm. broadly 26, 27 में visibility कम होता है, but अगर 13.5 nominal GDP plus growth rate लें, तो Hmm. 1350 का earning is a possible scenario. एंड वो Okay. सिनेरियो में वी लुक एट 27,000। सो अगर कोई 15 महीने के व्यू से इन्वेस्ट करता है, तो Hmm. इफ यू सी फ्रॉम ईयर द अपसाइड इज मोर लाइक 14-15%, जो Right. 11-12% एनुअलाइज्ड होता है। सो दैट Hmm. इज व्हाट वी थिंक विल हैपन इन द लार्जर कैप्स। मिड Okay. कैप स्मॉल कैप्स, मिड कैप इज क्लियरली एट अ प्रीमियम, एट 50% प्रीमियम। Yes. Small cap at index level is equal to Nifty, but Hmm. stocks that we like in small caps would be 30, 40, 50% premium than the larger Okay. caps. So Okay. this is where we are worried. And हमें Hmm. लग रहा है कि mid cap, small cap में you have to be very, very selective. Volatility Hmm. will be high, and आपका Hmm. filtering criteria should be very hard. नहीं तो Hmm. you will caught unaware on the volatility side. तो ये हमारी Hmm. strategy है, and we think that you have to be very selective, and it will be the price value gap in mid and small cap has to be large. Hmm. So traditional sectors or emerging sectors, what would you prefer? See, we are agnostic, ma'am. So हमारे Hmm. पास कोल इंडिया भी था, Hmm. हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पेटीएम भी था,
हमारा Okay. आज भी हम डिलीवरी ओन कर रहे हैं, एंड वी आर Mhm. ओपन टू बिजनेसेस. सो बिजनेसेस, वी आर ओपन टू इट. Mhm. एज यू नो कि एनटीपीसी ने 2-3 साल में, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस, कोल इंडिया ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है इफ यू टेक अ 3 year व्यू. सो Right. ऑलवेज बेटर टू बी ओपन एंड एग्नोस्टिक, बट हमारा Mhm. एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है कि हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अगर है, Mhm. एंड हम ओवर पे नहीं करेंगे ग्रोथ के लिए, तो हमारा ठीक है. पोर्टफोलियो प्राइस अर्निंग आज भी 15.7 टाइम्स है. बट Okay. हमारा आरओई विच इज हायर देन निफ्टी, Mhm. आरओई इज हायर देन निफ्टी एंड ग्रोथ इज हायर देन निफ्टी. So Okay. that is what our strategy is, that we are Mhm. open to all the sector, but Mhm. growth has to be at reasonable price. We'll not overpay for growth. राइट. मिस्टर पारेख, आपने कहा कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो है वो सबसे अच्छे गुड स्टेट में है इन लास्ट कपल 4 to 5 years. डीलेवरेजिंग बहुत सारी कंपनीज ने की. बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहाँ एनपीएस, आई रिमेम्बर 2017 में हम डर्टी डजन की बात करते थे. देयर बैलेंस शीट्स वर डिस्टॉर्टेड, हाई लेवल्स ऑफ एनपीएस, बट नाउ देयर बुक्स आर क्लीन. बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 1 साल में परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म ही किया है. आई थिंक 4 to 5% ऑफ रिटर्न्स, व्हाइल निफ्टी गेव यू 8.5% रिटर्न्स. Banking and financial services as an investment option, how do you see it? So I think, you're totally right. I mean, I used to run the banking fund in my earlier place at Nippon. Hmm. I'm, privileged to have met a lot of SBI chairmen in my Mm-hmm. career. So you're right, एक 10 साल बहुत खराब था हमारा, ऑलमोस्ट 10, 11, 12 से 2021 तक, जबकि जी. खाली एनपीए प्रॉफिट्स जो हो रहे थे वो सब Hmm. एनपीए क्लीनिंग अप में जा रहे थे. But True. all the good work that was done of not interfering, Hmm. जिसको फोन बैंकिंग बोलते थे, वो सब जो Hmm. 14-15 से बंद हुआ, Hmm. उसका बेनिफिट हमें, एनपीए इतने ज्यादा थे कि क्लीन अप Hmm. करते 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 4-5 साल लग गए. एंड देन True. आरबीआई गवर्नर्स ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया इन टर्म्स Right. ऑफ कि भाई जो भी है आइडेंटिफाई कीजिए जो Hmm. इक्यूआर हुआ था, और फिर Hmm. प्रोवाइड कीजिए. And then Hmm. certain banks may even stop to lend till they get Hmm. the house in order. So ये Right. सब बहुत अच्छा काम हुआ था, and we Hmm. have to really really give a lot of credit to the RBI on this and all the governors, and Hmm. that is why we saw this clean book value and the Right. sanctity of the book value, कि ये जो बुक दिख रही है वही बुक वैल्यू है, वो Hmm. बहुत मायने रखती है. माने वर्ल्ड ओवर जहां भी ये बुक वैल्यू की सैंक्टिटी जो जहां अगर हिल गई, तो Hmm. फिर वो प्राइस टू बुक कुछ भी हो सकता. इट कैन बी 1.2, 0.3 टाइम्स ऑल्सो. सो ये Very true. बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, द राइट Hmm. इंटरेस्ट रेट्स फॉर द इन्फ्लेशन, एंड Hmm. हेंस अ क्लीन बुक वैल्यू is what we have achieved after so much hard work. So I Right. think that is, on the price performance, you're right. Last year they have underperformed, but Hmm. structurally they have become very, very strong. In fact, True. we have larger banks in our portfolio, and we are Hmm. overweight larger banks, Okay. the largest PSU and all the leading private banks. And we believe that वहां पर leadership भी है, कासा भी है, कैपिटल Hmm. एडिक्वेसी भी है, फ्रेंचाइजी भी स्ट्रांग है, रिटेल डिपॉजिट्स भी अच्छी है, तो Hmm. उनका राइट टू विन बहुत अच्छा है, एंड वैल्यूएशन कंफर्टेबल है. सो मुझे लग Hmm. रहा है कि जो ये अंडर परफॉर्मेंस हुआ है वो थोड़ा ओवर ओनरशिप ऑफ एफआईआई से हुआ है, Hmm. क्योंकि वो बहुत ज्यादा वही ओन करते थे. तो जब Hmm. सेलिंग ये साल हुई है जो बहुत बड़ी हुई है, तो दे Hmm. विल सेल ओनली व्हाट दे ओन, and Hmm. that is also one of the reason that they have underperformed. We would have definitely lower credit growth this quarter. This quarter Hmm. में credit growth overall 10.7% था. तो जी. डिपॉजिट के अलाइनमेंट करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ भी अलाइन हुआ है, बिकॉज डिपॉजिट जी. ग्रोथ नहीं है इतना, फॉर Hmm. रीजंस दैट वी नो. सो उसके वजह से ग्रोथ थोड़ा टेपर डाउन होगा, बट मुझे Hmm. वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है. सो इफ वी थिंक फ्रॉम अ 1 to 3 year ahead, I think Hmm. banks should do well. ओके. मिस्टर पारक, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आप ओवरवेट है इस समय? बैंकिंग इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट यू जस्ट स्पोक अबाउट.
2025 के लिए, क्योंकि आप यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो कुछ ऐसे नए सेक्टर्स, नए थीम्स जो आपने सोचे हैं 2025 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे? ये सो हमारा पोजिशनिंग आई टेल यू, हमने डिस्क्रिशनरी में वी आर माइल्ड ओवरवेट, जिसको ऑटो इंसिलरीज हैं, ओके, एंड वी टेक एक्टिव सेक्टर कॉल्स. ओके। सो फाइनेंशियल्स वी आर ओवरऑल पॉजिटिव, बैंक्स में वी आर हुँ, माइल्ड ओवरवेट. उनका वेट ही 29% है निफ्टी में, सो वी आर जस्ट एट अराउंड 30%. ओके। अदर एनबीएफसीज ऑल्सो वी आर ओवरवेट. हुँ, Then domestic capital, all domestics may be a positive. So logistics we are overweight, telecom we ओके। are overweight, utilities we are overweight, हुँ, and then capital goods we are overweight. So that is where ओके। the domestic themes is where हुँ, we are overweight. Pharma we are mild overweight. IT ओके, हमारा underweight है. We are ओके, almost 5% underweight, and ओके, FMCG हमारा zero है, and oil and gas ओके। zero. सो हम इसे एक्सट्रीम कॉल लेते हैं बिकॉज नहीं तो अल्फा नहीं आएगा. एंड यहाँ जी। पर हमारा व्यू थोड़ा वीक है. एफएमसीजी कंपनीज अच्छी हैं बट ग्रोथ रेट नहीं है एंड वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है. दैट इज द राइट। रीजन वी आर नॉट देयर. एंड ऑयल एंड हुँ, गैस में वी हैव डिस्कम्फर्ट ऑन द गवर्नमेंट साइड बिकॉज पॉलिसी क्लैरिटी अभी भी नहीं है. एंड द हुँ, लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट में हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट है वैल्यूएशन. जी। सर, आपने कहा कि आप 1994 से मार्केट्स में हैं। तब का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल था, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑफ today's world actually? It is a drastic change. I know. I have been also been tracking markets from last 25 years, and it's drastically. पहले सेक्टर रोटेशन में 1-1 2-2 साल लगते थे, अब सेक्टर रोटेशन में 1 महीना 2 महीना लगता है. You So know, how very is style interesting. of investing, yeah, No, so changed? yeah, we see, ma'am, we also have learned and evolved with the Mhm, markets. Of course, when you see more cycles, it's more humbling. You tend to be more conservative because you've seen the fall, right? So mhm, you certainly get a more mature markets point of view. Yes, they have certainly changed. mhm, We've new businesses like Swiggy, Zomato. So mhm. the whole sectoral, you are seeing, and not only that, they've taken leadership. I mean, you don't own it, but it is Yeah, important to note down that not only they've come so fast, they've become mhm, part of the index. So it's a very right. important change that these new sector leaders, you Mhm, can't be, not looking at it, and you need to change. And there have been dramatical changes, like I remember DCL, Sanghi, yeah, they're all gone, right? yes. And fabulous telecom companies overnight went bankrupt. So the Mhm, learnings are that आज की जो निफ्टी कंपनीज हैं वो शायद कल होंगी कि नहीं रेलेवेंट, वो भी वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल. mhm, Disruption is a part of life. Changes will right. be very, very fast. And of course, the core principles of right business, right management, not overpaying for growth remains. I don't think so. That is changing. Of course, तभी हम 10-12 पी में लेते थे, 15-16-17 पी में फेयर वैल्यू हो जाता था. आज हम Right. 14-15-16 पे लेते हैं और 20 पी भी फेयर लगता है. इंटरेस्ट रेट्स भी डिफरेंट है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑल्सो. Mhm, बट सबसे बड़ा मुझे लग रहा है चेंज, सबसे बड़ा mhm, is the attitude of investors to equity as an asset class. I mhm, think that in the last 3 years, is the biggest change that I have seen. That mhm, the stock market was considered like a speculation, for a long time, and then mhm, it took a lot of time, mhm, and then once people saw the positive experience, we are able to see in terms of proliferation of डीमैट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड अकाउंट, म्यूचुअल फंड फोलियो ले लीजिए 4 करोड़, डीमैट अकाउंट ले लीजिए 13-14 करोड़. सो ये बहुत बड़ी चेंज है. ये एसआईपी जो हो रही है, जी, ये आई नॉट बी सरप्राइज कि 50,000 करोड़ एंड इवेंचुअली 1 लाख करोड़ की एसआईपी हो जाएगी. सो ये सेविंग का एक राइट एवेन्यू, ये बहुत बड़ा चेंज है एटलीस्ट मेरे कैरियर में दैट आई सॉ इन द लास्ट 2-3 years. सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी अब।
क्योंकि आपने कहा कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी डायनेमिक, और हमारे जो इन्वेस्टर का प्रोफाइल है दैट्स आल्सो चेंजिंग। अभी फर्स्ट जॉब लगती है तो हम स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर दिस न्यू जनरेशन people who are coming into the equity markets, and also I would want you to address asset allocation for 2025, because gold has turned out to be a good return. After a decade of 10 years, gold has given you a 25% per plus return in 1 year. So gold को आप कैसा देखते हैं, and your advice for the new generation? Yeah, I think the first advice for the new generation is please avoid short term. Nothing can be made in short term. So ये जो F&O है और जो options में जो हम activity देखते हैं, and वो बहुत ही हानिकारक है. And that is one area where we've seen that the amount of money they've lost is showing up in statistics. And this is all millennials and 22 to 25. This Right. is data which has come out. So that is one area where I would still feel there is no shortcuts. Okay. Investing has to be for long term. You can use SIP or invest in good blue chips, or you even do passive or active investing. They are very good vehicles. आप म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं. So that is the only route, and professionals को दे देंगे आप तो वो जो आपको, and costs भी बहुत ही comfortable है. माने आप प्रोफेशनल को दे देंगे एक रीजनेबल कॉस्ट पे, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है. कंपटीशन भी अच्छी है, which is good for the investors. Within fund managers or fund, there's intense competition. So that is very good, because the best one will always be able to outperform, and that is good for investors, and it's coming at a very reasonable cost. So मुझे लगता है कि that is what one should look at, and not look for short term gains, because it'll have a lot of short term pain. Asset allocation are very, very important. I see we are on the manufacturing side, but I'll still give my best on what I think should be the asset allocation. मुझे लगता है gold very clearly होना चाहिए, but एक दायरे से allocation होना चाहिए. It cannot be 40% of your balance sheet. It could be 5 to 10%. Equity में volatility रहती है. Equity में sometimes you may not see returns. I'm not saying ये साल, but you could see returns not even coming at times, and हमने cycle देखी है. So equity में allocation वही होना चाहिए जहाँ growth के लिए जो आपको day to day needs के लिए you should not be dependent on it. So that you should have a debt allocation, and then equity allocation you should keep, which is for your growth capital. And that is the right balance. And then, of course, it has to be customized. But that, I think, should be the right balance. And within equities, a dominant portion has to be large cap, and small portion in mid caps and small cap, not the other way around. मिस्टर पारेख, जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, एक सीख जो आपने बाजार से ली है इस वर्ष में 2024 में, द लर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट. I think one is the discipline of not overpaying and having a right margin of safety. This is a universal rule, but always that, you buy great companies, but buy at a price. And your margin of safety is very, very important. I think that is definitely one important learning. And then, of course, be open about it. I mean, you can't be closed about a new age company, or just be open about all potential investment avenues. Otherwise, you'll miss out. Very true. Mr. Parekh, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के. Thank you so much for your time, sir, and wishing you and your family, your team, a very happy and prosperous 2025. Thank you very much, and best of luck to all of you, and wish all the viewers a very happy, healthy, safe, and prosperous year. Thank you so much, sir.